ओके सो 84th क्वेश्चन लाइक नॉर्मल मेथड तो ऑब्वियसली वो रहेगी, तुम एक्स और वाई ढूंढो और फिर लोकस ढूंढो, राइट? वो काफी लंबी है, नॉट इन द सेंस कि वो एक्चुअली स्टेप ज्यादा एग्जीक्यूट करने को नहीं, बट लाइक वो लिखना बहुत प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। यानी इतनी छोटी सी स्क्रीन है, उसमें वो सब लिखो, सॉल्व भी करोगे तो पेपर पे वो सब लिखना, वो यानी क्यों, राइट? सो इंस्टेड ऑफ दैट मेथड एक अल्टरनेटिव मेथड है, मैं वो यूज कर रहा हूँ, राइट? अभी अभी रियलाइज की कि वो भी अपन यूज कर सकते हैं। सो जो लास्ट टाइम हुआ था अपन वैसे ही कर रहे हैं कि we'll just say this angle is theta, राइट? और ये चीज टू है, ये चीज टू है, हाँ ये टू है। लास्ट टाइम मैंने वन अज्यूम कर लिया था शायद से, आई डोंट नो। तो फिर ये ऑफ कोर्स क्या रहेगा, दिस इज लाइक 60 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी 120 डिग्री माइनस थीटा। सो दिस विल ऑफ कोर्स बी जस्ट 2 cosine थीटा। So तुम्हारा जो z है which is representing this point, complex number of course, which is like 2 cosine theta, तो तुम along the axis जा रहे हो और फिर तुम ऊपर जा रहे हो, it's like 2 e power I at 120 degree minus theta. So e power I at 120 degree, that is just omega, isn't it? So like it's just 2 omega e power I negative theta, so like negative I theta, right? But then remember ki 2 cosine theta, that's like 2 times the real part of e power I theta, right? So this is like e power I theta plus uska conjugate यानी कि e power negative I theta. So that thing plus 2 omega e power negative I theta. अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ, इट्स लाइक e power I theta plus, तो एटलीस्ट ये सिंप्लीफिकेशन के तो अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, सो मतलब वो बेटर हो जाएगा, राइट? तो इस 2 ओमेगा माइनस, सॉरी प्लस 1 हो जाएगा इन दैट केस, बट देन 2 ओमेगा प्लस 1 इज लाइक negative 1 plus square root 3 iota plus 1, which is square root 3 iota. So just square root 3 iota times e power negative I theta. अब यहाँ पे मुझे लगा था कि दैट आई शुड स्टॉप विथ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स और इंस्टेड मुझे कोसाइन थीटा साइन थीटा वगैरह यूज करनी चाहिए, बट नहीं, अपन इसके आगे ज्यादा जाएंगे। सो जो अपने ऑप्शन है उसमें अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, विच इज ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर, और तो एक्स वाई दिख रहा है, विच इफ यू थिंक अबाउट इट्स लाइक दिस थिंग, 2xy की बात करते हैं, नॉट जस्ट एक्स वाई बट 2xy। सो 2xy इज लाइक, टू इनफैक्ट 4xy की बात करो, so 4xy iota, that thing is just z square minus, z conjugate square, right? Which is like, of course, it's 2, because you know the thing, 2x times 2y iota, so z minus z conjugate times z plus z conjugate, whatever. This is like 2 times the imaginary part of z square in that terms of iota, right? So basically 2xy is equal to imaginary part of z squared, right? So you can use this fact, and also x square plus y square तो आपको पता ही है, just the magnitude of z का square, right? So just figure these things out. First of all, if you come from magnitude of z squared बोल देते हैं, that makes sense, right? तो कैसे भी कर सकते हैं, magnitude of z का square वो भी चलता है ना, what's the big deal? So let's do the thing, magnitude of z का square, right? So ये like two vectors का addition ऐसा ऐसा सोच सकते हो। तो इसका magnitude कितना होता है, just 1, फिर इसका 3 square of course, right? And उसके बाद क्या, फिर 2a वेक्टर डॉट p वेक्टर रहता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है कि 2ab कोसाइन थीटा, सो लाइक 2ab वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 2 sort of 3, कोसाइन थीटा का पार्ट कैसा है, सो दिस इज पॉइंटिंग एट थीटा एंड दिस इज e पावर i pi upon 2 minus theta if you will. So subtract करो like e power I pi upon 2 minus 2 theta, उसका कोसाइन यानी कि क्या, साइन ऑफ 2 theta, right? साइन ऑफ 2 थीटा, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये चीज अपन कर लेंगे, लाइक जेड स्क्वायर क्या होगा, जेड स्क्वायर इज जस्ट ई पावर 2 आई थीटा माइनस 3, बिकॉज आयोटा था, सो लाइक माइनस 3 ई पावर नेगेटिव 2 आई थीटा, एंड फाइनली just 2 square root of 3 iota, right? Yeah, so imaginary part चाहिए अपने को, right? Yeah, like it will just be, इसमें I sin of 2 theta वगैरह आएगा, इसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, so yeah, well basically it's just going to be what, imaginary part of z square is like uh 4 sine of 2 theta. I guess yeah, that is the thing, right? Because तुमने वो square किया, so 3 iota, okay, so 3 iota square is 3 but negative, and then ये चीज, और yeah, it works out I guess. So just 4 sine of 2 theta and then plus 2 square root of 3, so that is this part 2xy. So basically तुम समझ गया कि x square plus y square, that is just 4 plus 2 square root of 3 sine 2 theta, and xy is just 2 sine of 2 theta plus square root of 3, right? Yeah. So अब क्या, sin theta को eliminate कर देते somehow. So basically
Yeah, let's just multiply by square root of 3. Like square root of 3 xy is just 3 plus 2 square root of 3 sine theta. So just sin 2 theta. So what that means is ki x square plus y square equal to square root of 3xy plus 1. That's our locus. Easy as that, right? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कोसाइन थीटा साइन थीटा उसमें स्क्वायर रूट 3 वगैरह क्या क्या ला रहे हो, फिर उसको स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो सब कुछ, फिर देखो क्या हो रहा है, जरूरत नहीं, जस्ट डू इट डायरेक्टली. द थिंग इज इतना ये भी उतना ही बड़ा है, राइट, ये भी उतना ही लेंदी है, बट इसमें स्पेस कम यूज हो रही है पेपर की, सो दैट्स व्हाई ये बेटर है. ओके, सो इसका मतलब है कि अपना जो लोकस है दैट इज कहाँ पे चला गया, हाँ, सो सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 84 का सी. 85. 85 is from a pack of 52 playing cards, face cards and 10 cards, okay, and 10s are removed and kept aside. Then a card is chosen from random, then the remaining from the remaining cards. Face cards कितने हो गए, like हर सूट में किंग क्वीन और जैक वही थी ना. एस तो अपन फेस कार्ड में गिन नहीं रहे, लाइक तुम्हारे 12 कार्ड्स निकाल दिए ऑलरेडी, प्लस तुमने और 4 कार्ड्स निकाल के उसमें 10 रिमूव कर दिए. सो बेसिकली एस टू 9 कार्ड्स है अपने पास में. या मतलब क्या 0 to 9 तो ना. Yes, so basically decimal numbers. Okay, so ऐसे कितने 4 सेट्स है, मतलब अपने पास में कितने 40 कार्ड्स है. So if even is the event that the card drawn is an, और अब इनमें से तुमने कार्ड ड्रॉ किए रिमेनिंग कार्ड्स. इवन है कि द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, so like क्या probability, just 1/10 of course. E2 is the event that the card drawn is a heart. Okay, E3 event, okay, अपने करना क्या है, the following holds true. Wait, E3 क्या है, event that the card drawn is a spade. Okay, so the following holds. So probability of E1 और स्टैटिक लेवल probability of E की बात कर रहे हैं. ओह बढ़िया. ओके, नहीं इसमें ये सब भी है इन्वॉल्व, वॉट एवर. पहले तो ए का चेक करते हैं. probability of E1 क्या होगी, जस्ट 1/4. और probability of E2 क्या होगी, even if the card drawn, oh shit, it's not 1 it's like what 1/10, right. E1 का तो 10 रिमूव कर दिया, इसमें 9 तक तो है ना. लाइक ए को तो 1 मानोगे, नॉट 0. ये 10 कार्ड्स नहीं है हर सूट में, 9 कार्ड्स है. Oh, then okay, it's just 1/9. So 1/9 times 10 is just 1 everywhere. हाँ, so A is correct. So A है ना, A hold करता है. That's it. That's all you need. Yeah. No need for checking anything else. Most likely वो incorrect होगी. Next question 86. का single correct था नहीं. If the two roots of this equation are equal in magnitude but opposite in sign, then equal in magnitude but opposite in sign. The two roots कौन से? इसमें 3 रूट्स हो गए ना. अगर the two roots of this equation are equal in magnitude but opposite sign. मतलब wait, इसका मतलब कि P is actually a root of this equation, right? लोग इसमें द टू रूट्स कौन से यार, इसमें 3 रूट्स रहते हैं, क्यूबिक है. 2 कोई तो भी रूट्स है इसके जो कि ऐसा है लाइक इक्वल बट अपोजिट, राइट. तो बेसिकली क्या, P इज अ रूट, दैट्स वन थिंग यू नो. ओके, और क्या पता अपने को कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू नेगेटिव, ओके, इक्वल टू आर, जस्ट आर. सो लाइक नेगेटिव अल्फा स्क्वायर टाइम्स P इज इक्वल टू, हाँ ठीक है. सो एक काम करो, ऐसे रहो, अल्फा नेगेटिव अल्फा एंड बीटा, दीज आर आवर रूट्स. तो इसका मतलब हुआ कि ऑफ कोर्स लाइक बीटा इज इक्वल टू P, तो इसको P से रिप्लेस कर दो, जस्ट दिस थिंग, which means that Q is equal to what is just alpha P minus alpha P, तो मर गया, just negative alpha squared, and then R is equal to इनका प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, बस नेगेटिव R होगा ना, but whatever, just negative alpha squared P, but that's just equal to Q times P, right? Okay, so R equal to QP, which is C. Next question 87. 87 is this determinant. Okay, so 1 negative sin theta, negative 1 sin theta, 1 negative sin theta. Okay, इसको से रोटेट किया, राइट. ये बार बार नहीं हो रहा है कि बस रोटेट कर डालते हैं इसको एंड देन यू हैव टू फिगर आउट क्या होने वाला है. या ये 1000 बार आप नहीं देख चुके ऑलरेडी. जस्ट टायर्ड ऑफ दिस. इसका प्रॉपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए कि बस तुम रोटेट कर रहे हो एंड देन व्हाट इज द डिटरमिनेंट. ऐसा है ना कि ए बी सी है, फिर तुम इसका बी सी ए का डालोगे एंड देन उसके बाद में क्या, CAB. So you want to figure out that element, right? ये हर बार कहीं ना कहीं से आ ही जाता है. ओके, इसमें इसमें 1 सेकंड. ओके, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया इन लोगों ने, ये थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया. ओह
wait, this is actually different than what I thought. Oh, अच्छा ये अलग ही है पूरा. ये वाला है ही नहीं. मुझे लगा ये वाला है बिकॉज वो बहुत कॉमन देखा हुआ है. सो क्या फर्स्ट और सेकंड रो को थर्ड रो को फर्स्ट में ऐड कर दो, जस्ट यहाँ पे वन आ जाएगा. ये तो मर गए दोनों. इट जस्ट या वहाँ पे 0 0 लाइक इसका वन. ओके फाइन. This will be this thing sine squared theta minus minus just plus 1. That's the thing. This determinant cannot be 0. Yeah. Wait, cannot be equal to 3 for at least one value of what? One value of theta? फिर कभी 3 का इक्वल होगा ही ना ये तो. Yeah. Okay. Is 0 for no lies in 2 to 4? Huh? What? What is this? Oh, अच्छा वो 2 था यहाँ पे. Sorry. It should be 2 times of this thing. Okay. Okay, that explains क्या हुआ था. So it should be 3. अच्छा cannot be equal to 3 for at least one value of the. हाँ सही तो है. एटलीस्ट एक वैल्यू कैसे होगी जब पे 3 नहीं हो सकता. सो व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट. लेकिन किस टाइप का ये अजीब है. राइट. लेट्स डू 3.2. वेट अ सेकंड. 1 अपॉन इट कैन हैपन. सो 3 के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो ए इज करेक्ट श्योर बट देन व्हाई. हाँ I don't know. एक भी अजीब है. Is 0 for some value of theta? No. Lies in 2 to 4. Yes, I believe in that. Okay. No, okay. So C is the answer, I guess. A मुझे समझा नहीं इसलिए, नहीं तो वो भी आंसर करता. अगर एक्चुअली वो जो बोल रहा है वही है तो. Next. 88. If f is a twice differentiable function such that f double dash 0 equal to 4, then the value of this thing is. So like yeah, 2f sine of x minus 3f sine of 2x. Oh god, what is this thing? It's also दो इसमें break करो ना. So it's like this thing 2f of sin x minus 3f of sin 2x or something. Okay, जो भी है. Oh, it should just be 2 actually. Because yeah. Upon कहाँ पे चला गया ये? Upon x square. X square? Are you serious? Wait, why? 4. Okay, this is very weird. Let's just say क्योंकि तुम लोगों ने बोला ऐसा है, so we can just use Taylor expansion for f and we'll just approximate f of x as. I know ये करना मतलब not legitimate to do this for every function, but whatever, we'll do this anyway. It's of this form. It's like some constant. So c0 बोल दो उसको, then you want c बोल देते हैं, plus ax and then plus bx square, but then में डबल डेरिवेटिव जो है वो 4 चाहिए. सच में क्या होगा इसमें? f of like 4 upon 2 factor is 2, so it's just 2x squared over there, right? और yeah, this is the thing. So करो फिर इसको देखते क्या होता है. It's just 2. So it's approximately this thing actually. Now what do you have? Just 2 sine of x minus 3 sine of 2x plus sine of 4x. Approximately कितना? Like 2x minus 6x plus 4x. वो तो 0 हो ही जाएगा, right? So we don't have to worry about that. Sin x इन सबको like approximate करो as x basically. So instead of sin x, we'll just put x everywhere because बाद में x cube वगैरह आएगा. We don't want that, right? We only want x square. ठीक है. And यहाँ पे आ जाएगा ax. So वो a बाहर आ जाएगा. It's just वही. अच्छा पहले तो सिर्फ c था ना, तो वो तो वैसे भी मर गया और फिर ये चीज़ भी मर जाएगी बिकॉज उसने ये चीज़ ऐसे पुट की है. ओके, एंड देन फाइनली जस्ट 2x स्क्वायर करने देखना है. सो 2 टाइम्स क्या क्या आ रहा है इससे पहले तो जस्ट. ओके, सो फर्स्ट यू जस्ट वांट 2f ऑफ वो 2 बाहर आ गया एंड इट्स लाइक 2x का स्क्वायर. ओके, देन माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 12x स्क्वायर. ओके, और फिर क्या? 4x. ओके, सो just okay, wait, is this correct or not? It should be just plus 16 plus 16x square and all of that upon x square, right? Just that. So मतलब क्या है? Just 2 times of yeah 10 plus negative 10 plus 6 which is 6. 12 is the answer of this thing. So A is the thing. Next question. 89. थोड़ा कम रिगर था, I know that, but who cares? If this thing are non-concentric points, then A plus C plus C plus D is good. अच्छा E concentric points है. So there's a thing for concentric points की suppose हमारे पास में let's just say x I y I ऐसे 4 रहेंगे like for I equal to 1 2 3 4 ऐसे 4 points है जो कि yeah we are assuming that's concentric or x0 y0 is our center or let's just say like x and y center. Who cares? So
और जैसे सर्कल की बात कर लेते हैं इनफैक्ट, राइट। सबका जो सर्कल है इट्स ऑफ दिस फॉर्म एक्स प्लस वाई स्क्वायर plus ax plus by plus c equal to 0, right? And just say that is the circle which passes through all four of them. Right, so it's 4 points. That's the important part. Okay, so what you can do is कि सारे इक्वेशंस को एक नीचे स्टैक करो एंड देन मेक अ वेक्टर बेसिकली आउट ऑफ दिस. सो जो पहली चीज रहेगी दैट्स दिस वेक्टर एक्स आई स्क्वायर्ड प्लस वाई आई स्क्वायर्ड वाले क्वांटिटीज आएंगे पहले वेक्टर में. मैं इसको सिर्फ ऐसे ही लिख के छोड़ रहा हूँ. आई गेस तुम लोगों को पता है क्या करना है इसका, राइट? इसको बस एक्सपांड करना है इनटू कॉलम वेक्टर लाइक x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, फिर नीचे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ऐसे चार कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो भी तुम्हें पता है वो, प्लस a टाइम्स फिर एक्स आई ये वाला वेक्टर आएगा, फिर बी और ये डॉट डॉट में छोड़ रहा हूँ इसको, बी वाई आई ये वाला वेक्टर आएगा, एंड प्लस सी इसमें हर कोऑर्डिनेट 1 कर दो, सो 1 1 1 1 एंड ये इक्वल टू 0, राइट? बेसिकली ऐसा बोल रहे हो. जब तुम सब कुछ करेक्ट कर डालोगे, सारे इक्वेशंस को लिखोगे सही से, विल गेट दिस थिंग. सो एक काम करो ना, फिर थिंक ऑफ दीज एज एक्चुअल वेक्टर्स, राइट? तो ये कैसा हो रहा है कि चार वेक्टर्स है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दे रहा है, राइट? चार तो नहीं है एग्जैक्टली, व्हाट शुड आई से अबाउट दिस थिंग, यू नो कि चार है या 4 डायमेंशनल वेक्टर्स है, वियर्ड बट व्हाटएवर. सो इसे 4 डायमेंशनल वेक्टर्स, इनका डिटरमिनेंट सॉरी जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन है एक which is giving 0, they are basically linearly dependent vectors. इसका मतलब है कि इनका जो डिटरमिनेंट होगा that should be 0. So the determinant is just x i square plus y i square, वो जो भी है. इसे 4 पॉइंट्स तुम इसमें डाल दोगे, फिर एक्स आई सारे डालोगे, फिर वाई आई सारे डालोगे, फिर यहाँ पे तुम जस्ट 1 1 1 1 रख दोगे. दैट्स इक्वल टू 0, राइट? लेट्स डू इट. सो इसमें क्या हो रहा है, ए स्क्वायर कॉमा ए, राइट? सो इसमें क्या a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट? सो पहला जो आएगा जस्ट a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, फिर एक्स आई के लिए जस्ट हैव a पावर 4, देन फॉर वाई आई जस्ट हैव a, oh that is, it's not a power, okay, it's like a squared, sorry, so a squared and you got a, okay, weird, and you just have 1 1 1 1 1. ओके ऑसम. तो पहली चीज ये ए स्क्वायर को यूज करके इस वाले पूरे चीज को अपन काट डालेंगे, जस्ट ये ऐसा हो जाएगा ना, बी पावर 4 सी पावर 4 डी पावर 4. तो यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए बी सी डी, got 1 1 1, right? Yeah, basically this thing, right? और फिर we'll have to think about it this actually. This was unexpected, right? Okay. अब क्या, then we need to figure out a plus b plus c plus d, you are saying. मैं clearly जब भी a b की इक्वल होगा तो मर ही जाएगा डायरेक्टली. हाँ, right? This is like a fourth degree equation in a, isn't it? मतलब ये equal to 0 पे करना है. This is like, yeah, a fourth degree equation in a basically. So of course अपने को तीन वैल्यूज तो ऑलरेडी पता ही है, a के 3 जीरो अपने को ऑलरेडी पता है, जस्ट that समझा अपने को. And okay, what else can you do? Something else, has to be something else, right? ये अजीब हो गया. इनमें से कोई तो भी एक जो है वो, yeah, but that should not work. Yes, that is the thing. Okay, so मतलब ये जो चीज है, you can write like using dimensions and just a minus b times a minus c a minus d. और एक चौथा फैक्टर अपने को देखना है, वो क्या, maybe just put a equal to 1 everywhere, right? Because that will just, that doesn't make any sense, that is not doable. a equal to 1 हर जगह पुट के तो हो गया, फिर मतलब वो कुछ से कुछ हो जाएगा ना. Yeah, that can make it 0 though, so that is something worth doing, I guess. Okay, so अब इसमें क्या डालूँ आखिर में, a minus b. यार इसका ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 पे करना है. I need to think about it. How would you do this? Oh, I know a way. This is weird. Wait, नहीं, वो उसको और escalate कर डालेगा. It's not worth doing it. Almost आ गया था, but नहीं. Okay, think. There has to be something you can do. Okay, basically power 4 है for some reason. But if you think about it, it's like this thing ki, it's like a power 4 plus, I don't know, it's called the m a squared plus n a plus
L इक्वल टू 0 ऐसा जो रहेगा, सो जैसे x यहाँ पे, सो इस चीज की लाइक चार रूट्स आएंगे विच इज बेसिक, ये जो चीज है वो यही बोल रही है ना कि यू कैन राइट, ये जो वेक्टर है यू कैन राइट लाइक अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। सो इस चीज के चार रूट्स आएंगे, राइट, विच इज लाइक ए बी सी डी, और ये जो चारों रूट्स है वो ए बी सी डी, बेसिकली उतना ही बोल रहे हो तुम, और कुछ नहीं बोल रहे हो। हाँ, interesting. But how is this important? Yeah, it's not giving anything actually. Oh, this is in fact giving one thing, because x cube का term इसमें है ही नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? A plus B plus C plus D equal to 0. Oh, yeah, that's awesome. So B is the answer. Next question. 90. Oh yeah, you could have probably done it like this कि तुम उस you know सर्कल की इक्वेशन में तुमने ये टाइप की टर्म एक डाल के देखी एंड देन जस्ट सेट अप द इक्वेशन, राइट, दैट वुड हैव वर्कड एज वेल। व्हाटएवर 90, a plane something has a point P which is at minimum distance from the line this and that, and the distance AP is, okay, एक लाइन है, एक प्लेन है, उसमें एक पॉइंट P है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, मिनिमम डिस्टेंस, वेट अ सेकंड, हाँ, वेट वेट, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इसका डॉट प्रोडक्ट, you have to see that, right? Wait, that distance is like the same thing as that distance. You can do that. Oh yeah, okay, that would make sense, right? Because it's the same distance, in fact. Sure. मतलब वो this plus that is just bigger than or equal to उनके बीच का distance, right? Yeah, AP plus BP is bigger than or equal to that. But then, what if like B का तुम रिफ्लेक्शन ले रहे हो और समथिंग लाइक दैट, फिर उनके बीच में जो, हाँ, दैट, हाँ, जस्ट लास्ट टाइम जो पूरी चीज हुई थी वैसा ही हो रहा है तो शायद से। I want it in some different way. So 2, 3, 5. I think like 4 plus 9 plus 25. How is this going to help? It's not going to help actually. 34 plus 4 38. ये भी काम नहीं करेगा ना? So it's not having a nice value. But you can still try to do it, right? This is AP is. Okay. Because if geometry, we don't have to look for the chord. That explains everything. Okay, just put this in this thing. We'll see कि distance कितना है plane से. So for A तुम्हारा क्या distance आ रहा है? Just put that in there. Just 2 वो तो मर गया. Okay, 2 minus 3, okay, times 5, just 2 minus 15 minus 1. Okay, and B के लिए क्या हो रहा है? 2 once again, then minus 15. Huh, weird. फिर plus 35 minus 1. This is what? Minus 16 minus, okay, like minus 14 of course. And this is what? ये तो हो जाएगा 20 plus 1, 21. So this is the thing. Okay, and we actually have to divide by the things like sort of 2 square plus 3 square plus that. So actually क्या होगा? एक के लिए हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? नेगेटिव, आई नो नेगेटिव इंजीनियरिंग का, बट व्हाटएवर, स्क्वायर रूट ऑफ क्या? 4 plus 9 is 13 plus 25 is 39. Wait, what? Right, 38, sorry. Yeah, that's the thing. So A का ये distance है, then B का क्या distance है? This is 21 upon square root of 38. So basically ऐसा है ना ये कि A ऐसा होगा, B ऐसा होगा, अपने को P like, yeah, basically P इस लाइन पे कहीं भी हो. What we also have is like ये distance का sum is always bigger than or equal to this thing, unless equality हो जाएगी, which is when this is going to happen, right? So what do you want? Distance AP is equal to, oh, okay, you just have to take the ratio of this thing or something like that, right? So take ratio of these actually, right? So yeah, ये कितना, ये ratio is 14:21, right? This thing is A, I don't know, so it's 2:3 ratio, तो ये भी 2:3 रेशियो में रहेगा. व्हाट इज ए बी लेंथ? ए बी की लेंथ क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ कितना? 5 स्क्वायर प्लस, इज दैट 10 और, या इट्स 10 स्क्वायर एक्चुअली, ओके फाइन, which is 5 square root of 1 plus 4, so that's 5 square root of 5, right? So 5 square root of 5, अपने को निकालना है AP, which is just 2/5 of this thing, right?
So 2 square root of 5, which is B. Next question. 90 का हो गया 91. Wait a second, just wait a second. Okay, 91. 91 is if a integration of dx upon f of f squared is equal to cosine x upon 2 plus sine x plus, okay, what is this? अच्छा ये indefinite है, then the value of a is, wait what, और ये हर f के लिए होने वाला है कि क्या? What is this thing? This feels bad, really bad actually. Okay, to integration of dx upon f, just f for some reason, but इसमें f तो मेरे को दिया नहीं है, so how do you figure this out? Wait, what is this? That's just something that I can do. एक इसमें f squared है, एक इसमें ये है. For some reason it's not actually difficult. This is very weird. It's like this thing 1 upon f squared का जब इंटीग्रेशन किया, okay, that's just stupid. You can't do that. इसको डिफरेंशिएट करो ना पहले, तो इसको डिफरेंशिएट कर डालते हैं. Maybe that will actually give us something nice. So ये क्या हो जाएगा, a upon f squared minus 2 upon f is equal to इसका डेरिवेटिव ऑफ cosine x upon 2 cosine x, which is like what, नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा, ये चीज is 2 plus sin, फिर सब्ट्रैक्ट करो cosine cosine, so cosine square upon 2 plus sine का square, right? Which is like what? It's just minus 2 sine and then minus 1 upon 2 sine का square. So basically क्या, a upon f squared minus 2 upon f is equal to, यार ये सी घटिया चीज, oh god, seriously I don't believe this. तुम्हें गैस करना है इसको यार, कुछ भी तुम्हें गैस करना है इसको. Can you believe that? I'm fed up with this thing. ठीक है ना, तो फिर क्या करूँ इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख सकते हैं एज यू नो 2 टाइम्स ऑफ क्या, 2 टाइम्स ऑफ साइन प्लस 2 माइनस 2, बट देन उसमें भी नेगेटिव है. दिस इज लाइक व्हाट, सो ये चीज ना, नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ साइन प्लस 2 प्लस 4, यू कैन राइट दिस पार्ट लाइक दिस बेसिकली, बिकॉज या so plus minus plus is like यहाँ पे 3 आ जाएगा, so this is actually this, then you got 2 plus s का square, is this negative 2 upon 2 plus s का square plus 3 upon 2 plus, oh it's not square, just s, okay, plus s का square, right? So clearly a is 3. क्या घटिया क्वेश्चन था इसमें, तो इसमें गैस करना है, बट देन ये सॉल्व नहीं किया अपन इसमें कुछ भी, we just guessed. Number of words formed by using the letters of the word random in which vowels are in alphabetical order is, okay, I mean for all we know कि तुम इसमें कुछ और डाल सकते, लाइक तुमने A3 कर दिया, ओके कूल, ऐसा में तुमने कुछ और डाल दिया, लाइक ऐसा कुछ कर दिया, तो तब क्या करोगे, राइट? क्योंकि हो सकता है कि ये एक अकेला फंक्शन ना हो और अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग चीजें हो रही हो, हु केयर्स, राइट? Anyway, 92. Number of words formed by using all the letters of word random and in which vowels are in alphabetical order. So, first vowel is A and an O, because, yes, like A O or R and D and M, वो बस ऐसी, okay, उनको बेसिकली आपको insert करना है, right? Kind of like that. Maybe there are some different way. Okay, instead of doing that, we just first of all arrange R N और कहते हैं अपना डी एंड एम, तो इसमें कितने 4 हो गए ना, 4 फैक्टोरियल वेज ऑफ अरेंजिंग दिस. में एक अरेंजमेंट ले ली, उसके बाद अपने ए और ओ को इंसर्ट करना रहेगा, तो उसके लिए मैं पोजीशन चूज कर दी, राइट? बेसिकली या सो इट्स लाइक द स्टार बार थ्योरम. तुम्हारे पास में 4 स्टार्स है, हमारे पास में 2 बार्स रहेगी, बिकॉज well yeah 2 बार्स, बिकॉज कहीं भी हो सकते हैं, राइट? बेसिकली या दैट्स व्हाट इट इज. सो ये इनको भूल जाओ, इनके ऑर्डर को भूल जाओ, 4 स्टार्स या एंड 2 बार्स.
So basically क्या 62 ways 62 ways कि तुम A और राइट A और O को उसमें इंसर्ट कर पाओ नॉर्मल भी कर सकते थे आई थिंक इसको बट वॉट एवर and yeah that is the thing right 62 I guess so okay whatever it is this thing 6 factorial and then you got 6 factorial upon 2 factorial 4 factorial तो मर गया yeah 6 times 4 times 3 is the thing which is what 24 times 3 which is 6 and then 72 और वो इसमें है नहीं हाँ? इसमें है नहीं वो आर यू सीरियस बट वी डिड द थिंग तो ये काम करना चाहिए था व्हाई इज दैट नॉट हियर कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं नहीं 24 times 3 is yeah like 72 right 72 is the thing so EQ बड़ा EQ ऐसे गड़बड़ तो नहीं है इसमें कोई भी तो कैसे इन लोगों ने किया क्या प्रॉब्लम है इन लोगों की you're just arranging them right what's yeah so then कैसे नंबर्स आ रहे हैं इन लोगों के हाउ इज दैट पॉसिबल पर्टिकुलर ऑर्डर पे वो चाहिए राइट मे बी लाइक 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 वो है ही ना यही तो तुम्हें दिख रहा है ना 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 ही तो है ये सेम ही तो चीज आई है विच मीन्स नहीं इनका गलत है इनका जस्ट गलत है ओह शिट ओके समझा क्या गलत हो मेरा 6 times 5 times 4 times 3 फिर 2 मर जाएगा ओके so this is 20 times what 120 sorry shit 18 times 20 मतलब क्या 360 which is the next question 93 like by symmetry 6 factorial upon 2 हो जाएगा right that also makes sense okay 93 minimum distance between the parabola this okay and that is ये parabola and fine minimum distance between the parabolas 2 points just like this is happening let's see क्या होता है इसका so first what do you have just have y square minus 8y plus 40 okay just need like plus 16 first of all okay whatever y is equal to 4x minus 40 मतलब क्या y minus 4 का square is equal to 4x plus 16 minus 40 which is like what 4 times of x plus 4 minus 10 which is x minus 6 I guess and what about this one it is okay it's like x minus oh it's that one oh okay yeah exactly इसका opposite is just this thing x minus 4 का square is equal to 4 times of y minus 6 right okay तो क्योंकि अपनी सिर्फ ज्योमेट्री का देखना है एक काम करो जस्ट पुट x so just put y minus 4 and x minus 4 as y and x so क्या हो जाएगा y square equal to 4 x minus 2 and x square is equal to 4 y minus 2 better I guess right so आपने क्या ढूंढना था we want to find the minimum distance between these parallels okay so क्या पैरामीटराइज करना पड़ेगा ना I don't want this to parameterize at all think करना ही पड़ेगा अपने को there's no way so we just have to do this thing ठीक है ना तो इसी से just figure out the normal we'll see what happens what minimum distance okay using t1 for this whatever जो भी है it's like y is equal to no normally कितना negative sorry y equal to mx minus 2am minus am cube रहता है normally right it's just going to be what y is equal to m instead of x we just have x minus 2 and minus 2a 2 basically it's minus 2 times of m minus a just once like minus m cube that's this thing so you normalize go and similarly तुम इसके लिए normal ढूंढोगे instead of y just have what yeah instead of y just have x right so this is normal for one of these guys and for this guy
just have x is equal to, it's like m dash, so 1 upon m basically. 1 upon m times, instead of 5 just have y minus 2. Let's jump minus 2 upon m minus upon m cubed, I guess. Yeah, so ये दो चीजें अच्छी हैं. Okay, understood. इसको m से मल्टीप्लाई करा दो यार. It's this thing mx equal to y minus 2 minus 2. Huh, interesting. It's like y minus 4 basically. Y minus 4 minus 1 upon m squared. और इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा y is equal to mx minus 4m minus m cube. Okay, very interesting. So mx minus y दोनों केस में सेम हो जाएगा, राइट? इस केस में क्या है, लाइक -4 -1 अपॉन m स्क्वायर, और इस केस में क्या है, 4m plus m cubed. Seriously, what? Okay, so basically what, m cubed plus 4m plus 4 plus 1 upon m squared is equal to 0. अब क्या, ये तो बड़ा अजीब हो गया यार. एम क्यूब आ गया फॉर सम रीजन. ये स्क्वायर स्क्वायर से जा रहा है ना. ओके, थिंक अबाउट इट, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा इसमें. एम क्यूब लिया अपन बस 1 upon m था उसमें. या this was the thing. So okay, this is the thing, so we just have to figure out the slope. Figure this out somehow. So m power 5 plus 4m power 3 plus 4m squared plus 1 is equal to 0. This would have worked if there was some more terms, but there aren't. Power 5, how do I even use that? Yeah, not doable. तो एक solution इसमें निकालो. M equal to -1, right? Because -1 plus 1 0, फिर -1 plus -4 plus 4 0. So okay, m plus 1 को निकालना है, right? So m plus 1 से डिवाइड करो इस चीज को. ये कितना लंबा होने वाला है यार. Wait, why do we even care? M equal to -1 is the normal that we're looking for, of course, because yeah, मतलब जो पैराबोला अपनी रहेगा वो ऐसा और ऐसा रहेगा उसका भी. So that is the normal that we're looking for. So m equal to -1. I should have done that from the start itself. So m equal to -1, right? Okay, cool. So इस केस में क्या, our yeah, like m is just -t in that case. ये कितना ऑब्वियस था यार, मैंने ये क्यों किया था सारा. Like it's just, oh god, इसमें x y सिमेट्री है ना. Yeah, बस इसमें से इससे ढूंढ लो. Okay, so what, like our t will be 1 in that case. So t1 is just 80 square. Okay, so 2 0 plus 80 square, which is just t square, like 1 280, so just 2. Awesome. So just 3 2, but then here जो रहेगा just gonna be 2 3 because उससे उल्टा है सब कुछ. So that's the thing, मतलब कि square root of 2 is the distance. So D is the answer. Next question. Next time मैं यही करूँ रहा कि symmetry बोल के बस खत्म करा लो. 94. 94 is the equation of the normal to the curve. This curve to the point 2 4 is okay. Equation of the normal to this curve to the point 2 4. Okay, cool. So slope कितना रहेगा? It's just 4. So slope of the tangent, of course. Just 4x power 3 आ जाएगा in that case. Okay, cool. So the slope equal to x power 3 for normal stuff, but then I choose -1 upon x cubed for the for the normal effect. ये tangent के लिए, ये normal के लिए, and this is equal to y minus 4 upon x minus 2. ये क्या होगा actually? -1 upon 8, right? Yeah, that's the thing. ये तो easy था, काफी easy था. It's just what? It's like 2 minus x is equal to 8y minus 32. मतलब कि x plus 8y is equal to 34. That's the thing. 34, yeah. So x plus 8y, yeah. So A is the answer. Next question. 95. Okay, this equation has a solution for x, y, z besides 0, 0, 0. The value of k equals. अच्छा, तो basically इसका determinant 0. That's all we're saying. Yeah. ठीक है ना, determinant 0 करना पड़ेगा. Okay, ये क्या है? 1 2 2, इसमें 1 एक और है, इसको subtract करो. Just what is this? 1 2 2
like 0 1 2 and then you subtract कर दिया. No, I guess there's no need, like 3 4k whatever is equal to 0, so subtract that from there, just 1 1 0 0 1 2, got like 3 4k is equal to 0 whatever. 3 subtract के just 1 1 0 0 1 2, that is gone, just 0 1k. मतलब ये देखो ना, just yeah, like k equal to 2, that's the only way. So k equal to 2, so for that c should be the thing. Yeah, next question. Wait, no. नहीं सही है ना, सही है. Yeah, next question. 96. 96 is the value of this thing is equal to what? Cot of 75 degree minus tan of 70 degree. Cot theta minus tan theta upon cot theta plus tan theta. Okay, so like क्या हो जाएगा ये? C square minus S squared upon C square plus S square, I guess. Just C square minus S square in that case, which is like cosine of 15 degrees. Okay, cosine of 15 degrees is this thing. Okay, so like 2c square minus 1 is equal to cosine of 30 degrees, which is actually square root of 3, right? Shit, square root of 3 upon 2. Almost. So like 4c squared is equal to 2 plus square root of 3 हो जाएगा, that is because ये उधर गया, just yeah, 3 upon 4, मतलब 3 is square root of, so c is just equal to square root of 2 plus square root of 3 upon 2. Yeah, I'm gonna do this thing. So just upon 2 square root of 2, यहाँ पे square root of 4 plus 2, ठीक है ना, so square root of 3 plus 1 plus square हो जाएगा basically. Yes, so this is the thing, which is like what, यहाँ पे 4 का डालो ऊपर square root of 2, which is like square root of 6 plus square root of 2 or something like that. Sure, that should make sense. So this is the answer. मतलब yeah. I mean, what else could be the thing? That's cosine of 15 degrees. So square root of 6 plus square root of 2 upon 4, which is B. Next question. Oops, you can't get it. B. Okay, 97. 97 is the plane. This is rotated about its line of intersection with the plane x equal to y by right. What? Line of intersection with the plane x equal to y. Okay. एक plane है, दूसरा plane उसे intersect कर रहा है. It's rotated about that by a right angle. Its equation in the new position is by a right angle. Wait, what? This is weird. Okay, I see तुम क्या कर रहे हो, but it's exactly like this. Its new position is line of distance from x equal to y. So it's like this thing, right? So क्या ये 3 1 negative 2 dot r vector is equal to 1, and this thing is 1 comma negative 1 comma 0 dot r vector is equal to 0, right? Basically, I mean, yeah, ये दो ऐसे planes है, and you want like to rotate them. Oh god. So एक point बोल दो जो कि ये दोनों plane से बैठता हो, right? Because then I'll use that for some stuff. So x equal to y से put करो, what you get, like it's just 4x minus 2. Z को 0 put कर दो. Okay, not 0. Let's put okay, so just have to put a 0 or something because अब 4y आ रहा है, और you don't want that, right? You could put z equal to 81/2, then this x. Okay, तो फिर एक काम करो ना, we just say r naught is equal to this thing 0 0, and for that we just put negative 1/2, right? So yeah, मतलब r minus, so अपन हर जगह पे जब r वेक्टर की बात करेंगे, it's actually like r vector dash, ठीक है? So r vector dash is what? It's r vector minus r naught vector. Anyway, this is the thing. आपने करना क्या है basically? So at some point you have this, हाँ तो equal to 0 कर दो ना फिर यहाँ पे, cool. So तो करना क्या है? Right, so ये like दो planes है, ये you want like rotate about that point. तो ये एक नॉर्मल वेक्टर है, यहाँ पे दूसरा नॉर्मल वेक्टर है. Okay, it's kind of complicated. Actually, नॉर्मल वेक्टर. So it's this thing, and then there's this thing. ये जो line of intersection है उसका about अपन rotate कर रहे हैं by what?
90 degree, right? So इससे खुद से perpendicular, I guess. Okay, very weird. I know a way. Okay, let's just say this is actually a vector and this is b vector. So this is a vector, this is b vector, of course. तो हम क्या कर सकते हैं? A vector cross some vector which is upwards, right? Because that will move it into the plane. That makes sense. Yeah. So just a vector cross b vector cross a vector. Because think about it, b vector cross a vector is like, or a vector cross b vector. Who cares? Yeah. जो भी है b vector cross vector चलता है ना. So वो ऐसा हो जाएगा, and then it's like in that direction, whatever. Plus minus कर दो उसको जो भी है. Yeah. Because something not equal to 0 करना है in any case, so we don't care. Right, this is our new vector because this will be perpendicular to a vector as well as it's actually in the plane. So, awesome. Which is, so what is this going to be like? A square times b vector minus a dot b times a vector. So, let's go calculate करते हैं. Just a square is what? 9 plus 1 plus 4, which is 9 plus 5, okay, 14. 14 times b vector minus a dot b is 3 minus 1, 2. So 2b vector, 2a vector actually. Let's do it. So 14b vector इनके 14 of this क्या होगा ये? 14 negative 14 0 subtract from that this thing, so basically negative 2 से multiply कर दो, so negative 6 हो जाएगा, then it's just negative 2 over there and it's like this is 4 करो add, क्या हो जाएगा 4, अरे इसको reduce करो ना, 7 minus 1 कर डालो in fact, so like what you get in that case 7 negative 7 0 because 7, right? Okay, and minus a to करना आपको, so just minus what 3 1 and then negative 2, I guess, this thing. So just this vector 4 negative 8 and 2, इसको और reduce करो, it's just this thing 2 negative 4 and 1. वैसे ऐसा होगा ना कि 2 4 negative 4 1 that dot with what r vector is equal to ये चीज dotted with r naught vector, so 0 0, okay, and then z was just negative 1 upon 2, right? So yeah, like just negative 1 upon 2 there. Yeah, that makes sense. So उधर डाल दो, just 4x minus 8y plus 2z plus 1 equal to 0. Yeah, so like I guess A is correct. So A is the answer. Next question, 98. This integration is equal to what? So like x square cosine x plus sine square x upon x plus sine x ka square. Squared. That's different. I guess like it's the derivative of that thing or some way, right? So yeah, just 1 plus cosine x का इसमें रोल कहीं ना कहीं होने वाला है, इसमें x square आया है for some reason, 7x square over there. Not what I expected. So cosine x plus sine square x. Then, something else. I don't want to be dealing with this. What if like I write it x square cot x और फिर नीचे just x cot x plus 1 हो जाएगा, right? That could go really wrong actually, because square cot, no, that's just not going to work out. कोई और तरीका. Wait a second, it's not that bad actually. Okay, so it's like integration of what x square cot x, weird but whatever, plus 1 upon x cot x plus cosec x. Oh, that's different in that case. Oh, okay, that's bad. Now what? How do I take that cosine x out? So we'll have to deal with it. Something else. It's like x times of x cosine x plus something like that, right? Okay. Think. Cosine x, think what, like x plus sine x एक जगह पर है, ओके. ऊपर क्या रखना चाहिए अपने को? Something of it like x plus sine x times कुछ तो भी function, right? Because इसका derivative actually minus फिर वही same function and then under the derivative is what 1 plus cosine of x. It's gonna be this thing, right? Okay. इसमें साइन स्क्वायर इन्वॉल्व है and then cosine x सिर्फ एक ही बार आ रहा है, right? So I'm guessing कि ये जो चीज़ है यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए शायद.
So if there's x square over this, like this is x square और फिर f dash में 2x आएगा and then 2x times all of this, right? X plus sine x. Wait, but then where's the sine square x involved? That should also be there. So इसमें वो कैसे आएगा? Yeah, that should be there. How do we bring that? बहुत लंबा हो रहा है. Okay, just इनका डेरिवेटिव लेके देखते हैं. या ऑप्शन का डेरिवेटिव लेके देखो. क्या क्या तुम्हारा आ रहा है? x कोसाइन x, मे बी x कोसाइन x हो सकता है, राइट? So इसमें जब x कोसाइन x पुट कर दोगे, लाइक f डैश क्या होगा? जस्ट कोसाइन x प्लस x sin x. So x plus sin x times cosine x plus x sin x. इसको करेंगे what you get just like sc plus xs squared plus x squared s plus x times c minus x cosine x times this thing just what x cosine x plus x so minus expression minus x c squared. Okay, तो ये तो गया. Oh wait, नहीं इसमें है ही नहीं फैक्ट. सी स्क्वायर चाहिए ना, इसमें कहाँ पर है ही नहीं. Okay, x cosine x at least गया and then it's like तो ये काम नहीं करेगा, right? Okay, so something else. This one what? X sin x maybe. X sin x, then it's going to be what? Oh, okay. For x cosine x, should not be this thing negative, वगैरह, but still वो उतना ही बुरा है. It won't actually help, or it might just help. Let's try it out. सब negative चाहिए in that case. Okay. Then यहाँ पे function में क्या मिलेगा in that case? It's this thing. xc minus x squared s. Then you just have sc minus x s squared. Okay, then plus f and a xs time. Okay, minus c times this is like okay fine. Oh wait, nahi. F was what? F was just x cosine x, right? Yeah. So just minus x cosine x and then minus x cosine x का square. Okay, cool. So ये तो मर गया. Okay, then this combined just x squared negative x of course. And not this combined. Okay, sorry. ये combined. It's like there's just negative x and then you got negative x squared sine x. Something's not making sense, right? Yeah, this won't help. So A तो correct नहीं है. C doesn't look very convincing because it's just sin x is fine. So B would be the thing, right? B is the thing, I guess. So when it's B, यहाँ पे क्या जाएगा? It's just sin x plus x cosine x minus what x sin x times 1 plus cosine x, right? Shit, x sin x चाहिए. Cosine x, which is what? It's just x squared cosine x, which is yeah there, okay, plus x sin x. Then you have plus sine squared of x plus x sin x cosine x minus x sin x cosine x minus x sin x. तो ये तो मर गया और ये भी मर गया. बढ़िया. It is this thing. So yeah, it works out. So this is the answer B. Next question. कभी कभी करना पड़ता है options. Yeah. 99. Let's hope 100 तक 1 घंटा ना हुआ हो. This expression simplifies, so it's like sine 27 degree cosine 57 degree, 87 degree. Ooh, doesn't look good to me. Sine and then यहाँ पे sine डाल दिया आपसे एक बार. Okay, 7 degree and then you want अच्छा इस format में लिखना है. I don't like these even powers actually. So okay, sine of 90 minus complementary देखो ना. So 27 degree का क्या करना? 27 degree का complement क्या रहेगा? 90 minus that is just 63 degrees. Okay, not really nice. Okay, फिर क्या है cosine का 57 degrees. इसका complementary क्या रहेगा? Once again यहाँ पे 3 degree आने वाला है and then it's just what 33 degrees. Okay, 87 degrees का okay just 3 degrees, huh? Interesting. Just 3 degrees. Wait, cosine 3 degrees, sine 27 degree and नहीं यार मतलब हेल्प ही नहीं करेगा. Okay, you can convert that cosine to sine, so like just sine 30 degree. Okay, so like ये चीज sine of 27 degree, sine of क्या I've seen this here. Yeah, like I think I've seen this somewhere. ये क्या चीज थी? Sine of
33 degrees and then sine of 87 degrees. Like, so कोई progression है क्या? Going from there to there, how much is the jump? This is just a jump of, it's not making sense for some reason. Ah, ये 6 की jump है, but ये कुछ से कुछ हो रहा है, right? Oh no, it's not gonna make sense. Even when you deal with it correctly, it won't make any sense. Something's off about this. Cosine 57 degrees, right? So when sine में convert किया, it becomes this problematic thing. Okay, what if we convert that to that? So like, अच्छा अगर ये नहीं तो 90 minus ये सारे क्यों रहेगा progression में? No, there won't be. Okay. Wait. 60 minus, okay, as I thought. Fine. It's like this thing. Oh, I should have known. Sine of x, sine of 60 minus x, sine of 60 degree plus x. If you remember, this is actually like what? 3 sine, that was the thing, right? Okay, 3, 9. Wait, that was the thing or not? For example, like x equal to 30 degree, it's 1 upon 4. So, yeah, like, okay, sine of 3x upon 4, I think. Yeah, so for example, x equal to 30 degrees, so let's put here, it just becomes what? Do I really have to show this to anyone? No. So this is the thing. Yeah, I'll just believe this is the thing. Okay. I guess that was the thing actually. 4 that also makes sense. So it's just this thing. Sine of 3x upon 4 is sine of what? 81 degrees upon 4, which is sine of 9 degrees. Sorry, cosine of 9 degrees upon 4, which is B. Next question. 100. 100 is if 2a plus b plus c equal to 0, then the quadratic equation, this equation has no roots in this thing, both roots in 0 to 2, exactly one root in. Okay. C is not equal to 0, and then this is happening. Okay, cool. 2a plus b plus c. That's equal to 1 over there. That's equal to 0, huh? 0 to 2 के बारे में बहुत बोल रहे हैं लोग, right? Let's try it out. At 2, it's just this thing, 4a plus 2b plus c, right? This is f of 2. F of 0 is just c, so you could add the average load basically, right? So f of 2 plus f of 0 is just 4a plus 2b plus 2c, but that's just 0. So f of 2 and f of a negatives of this, right? So yeah, that's like, and c is not equal to 0. Okay, that's like f of 0 is non-zero, f of 2 is non-zero, negatives is negative. So that's at least one root. Not actually at least, exactly, just quadratic again. There's exactly one root in 0 to 2. So B looks correct. Okay. Next नहीं बस 100 questions done. Okay. So और कितने बचे? काफी सारे. Fine then. Let's go to the next video. Bye.